What a shocking start to the day, huh? I slept really late last night. मेरी टूटी टूटी सी नींद आई थी. I woke up in the morning and I slept again. I woke up right now in like 20 minutes ago, 25 minutes ago. And bro, I saw like that Fabrizio का tweet, ठीक है? And मुझे लगा all these fake Twitter pages वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे वो फब्रिजियो रोमानो का फब्रिजियो रोमानी कर देता है, या वो एक आर कहीं खा जाता है. आई वाज लाइक ये ऐसे कुछ होगा, एंड देन आई एक्चुअली सॉ कि लाइक नहीं, इट्स एक्चुअली फब्रिजियो, मतलब फुल ब्लू टिक एंड ऑल, नाम एंड स्पेलिंग एंड एवरीथिंग इज फाइन. देन आई सॉ व्हाट द लाइक WTFs एंड एवरीथिंग. डिस्कॉर्ड पे काफी चर्चा हो रही थी, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपेंड भाई. एंड देन वो लिवरपूल वाला स्टेटमेंट देखा, एंड आई हैव पुट zero apart from the caps wala thing. I have put no slow down meter and everything, so the chat will keep flying, man. um this came out of nowhere, and abhi jo updates aa rahi hain, not only him, his entire coaching staff is leaving. So there's a lot to, मतलब काफी सारा गेस वर्क है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. यूजुअली यू हैव ITKs या कुछ ना कुछ होता है जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि ये सब होने वाले. इनफैक्ट आई एम श्योर एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द जनवरी या फिर दिसंबर के टाइम पे मैंने पढ़ा था दैट क्लॉप इज साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन. लाइक व्हाट द हेल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से ही इज लीविंग, एंड इट केम आउट ऑफ नोवेयर. ग्रिज हैड नो आइडिया, आई गेस, बिकॉज ग्रिज वुड हैव लेट अस नो इन द ग्रुप. कुछ भी नहीं था यार. क्रेजी. आर्सेनल गेम से पहले भाई, मतलब वो तो और भी, अब तो इतना इमोशनल हो जाएंगे वो लोग. देयर मे बी पॉलिटिकल रीजंस यार, पता नहीं, पूरा कोचिंग स्टाफ निकल रहा है यार. एंड आई एम थिंकिंग इट्स मोर ऑफ अ हेल्थ इशू. मेरे को फीलिंग आ रही है इट्स मोर ऑफ अ हेल्थ इशू देन पॉलिटिकल रीजन, बिकॉज इफ इट्स पॉलिटिकल ना, वो फैंस जो आग लगाने वाले हैं, मेरे से तो मुझे नहीं लगता होगा. ETH was right, eras come to end. I know, that's a very popular joke that's going on. But एक काम करते हैं, before anything ना, let's just first watch the video for nobody who's watched the video. अभी तो आप लोगों ने अगर tweets वगैरह देखे तो ठीक है, but in 5 minutes we'll watch the video. अब टाइटल पक्का गो क्लब ग्रो भाई. I will still say, like, of course, as an Arsenal fan, I want us to win, but Klopp deserves to win in his final season, man. Of course. Respect to Klopp as a rival, यार. Sad हो गया भाई. Definitely, it's a very, very sad day, man. क्या हुआ क्लॉप को? What is the health? I don't know. I'm just guessing it's a health reason, because अभी हम वीडियो देखेंगे तो मैं कहीं ना कहीं एक दो चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ यार. Klopp to Arsenal if Arteta is gone. Arteta का तो इनफैक्ट अभी आगे that he's going to sign a contract extension. नाउ डू यू थिंक इसका नॉक ऑन इफेक्ट क्या होगा? नंबर वन, देखो, एक दो चीजें हैं हाइपोथेसिस जो मैं भी क्लियर कर लेता हूँ. नंबर वन, आई थिंक या हिज एनर्जी इज लो, राइट. ये सारी चीजें हम बात करेंगे इसके बारे में. मेंटल फटीग, पता नहीं, मेंटल भी हो सकता है, कुछ हेल्थ रीजन भी हो सकता है. बट देखो, Klopp is leaving, but I don't think Liverpool would have announced this on their official social media जब तक they would have agreed next season आएगा. मेरे को नहीं लगता कि ऐसा सीन होगा, एंड आई एम श्योर काफी डेविस्टेटिंग होगा यार. आई एम प्रीटी श्योर. मतलब क्या मतलब, मैं तो समझ भी नहीं हो गया. क्लॉप टू जर्मनी नेशनल टीम, उसने तो आई थिंक बोल दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू मैनेज फॉर अ फ्यू फॉर अ टाइम. या जावी टू लिवरपूल नहीं, मैं तो ओलोंसो की बात करता. नो वे एज एन आर्सेनल फैन भाई. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द इफेक्ट ऑन द प्रीमियर लीग. ओके, मतलब आई विल से that this is the loss of a very, very influential. It's a big moment for Premier League, huh? This is like losing one of the best managers of all time in your league, यार. मुझे भी समझ नहीं आ रहा. Again, something must have gone really wrong. ये सब ना, प्लीज प्लीज, ये सब चीजें तो मत करो. ये तू भी ये मत कर भाई. He is not going to manage for a while. There's a deep emotional connect with Liverpool that he has. I am telling you, he has more chances of coming back and री-मैनेजिंग लिवरपूल देन एक्चुअली जॉइनिंग अनदर प्रीमियर लीग टीम. एंड बारसा तो अभी नहीं हो पाएगा. वो है ना, ये लापोर्ता ड्रीम्स ऑफ इट. भाई, इस जर्नलिस्ट को कैसे पता कि 25 मिनट में लापोर्ता को ड्रीम्स आ गए? पहली बात तो स्पेन में ना सुबह अभी कितने बज रहे होंगे? स्पेन में अभी मतलब 2-3 बज रहे होंगे, ठीक है? तो लापोर्ता जब तक वो अगर आफ्टरनून झप्पी ले रहे, तब तक तो उसको सपने नहीं आने वाले. ये एम ही फालतू पंती है. लास्ट ट्वीट क्लियर हो गया. ओके ओके, लेट्स सी फैब्रिजियो का लास्ट ट्वीट क्या है, फिर उसके बाद लिवरपूल का देखते हैं.
Fabrizio Romano का लास्ट ट्वीट, पहले तो उसका पिन ट्वीट ही है. Klopp reveals when we sat together, मैं इसको शेयर ही कर देता हूँ. When we sat together with the club talking about potential signings next summer camp and we can go wherever, the thought came up. I felt like I am not sure I am here then anymore. I'm surprised myself by that and started thinking about it. So is it just the lack of ambition then? कि मैं वापस अंडर मतलब I cannot perform with the lack of wages, sorry, the lack of signings. Bro, this is a big L यार. सही कह रहे शिखर. A huge L man for Liverpool Football Club then. ये तो यार अभी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. अभी हम सब से स्पेकुलेट ही करेंगे कि अलोंसो आएगा या फ्लिक आएगा. आई थिंक देयर मस्ट हैव बीन सम अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल की बातें शुरू हो गई होंगी. बट दिस इज अगेन यार सुपर क्रिप्टिक यार. भाई वीडियो देख लो, सब क्लियर हो जाएगा. यस, वीडियो देख लेते हैं, चलो साथ में. जस्ट वॉच द वीडियो राइट नाउ. लिवरपूल की ही देख लेते हैं. I really would like एक सेकंड you to accept the decision. That would be nice. And शुरू से then देख लेते हैं. a message to supporters. I really would like you to accept the decision. That would be nice. And then, if I can ask for one more thing ओके after ओके निश. telling you, don't sing my song too early. After telling you, be loud in the stadium, stuff like that. I could ask you for one more thing. It would be, don't make these games about me. कम ऑन यर्गन, Because तेरे को there's no पता ये need नहीं for होने it. वाला. We always knew, and the only thing I always wanted is the full support for the team. It's not for me. I know about our relationship. I don't need any नहीं counseling. नहीं आएगा कॉपीराइट. We will किस have बात a पे moment, कॉपीराइट कर देंगे? maybe last You match can day critique here it. or You're somewhere not else. stealing content. I You mean, can critique it. in other countries or other competitions, there's enough time to do these kind of things. Yeah. Let's now really go for it. The No, outside it won't world be want to copyrighted. use this decision, laugh about it, blah blah blah. Want to disturb us. We are Liverpool. We went through harder things together, and you went through harder things before me, and let's make a strength of it. That would be really cool. Let's squeeze everything out of this season, and have another thing to smile about when we look back in the future. Thank you. Crazy man. This part ना, ओहो ये तो दूसरी वीडियो है. एक और वीडियो होनी तो चाहिए थी इनकी. मैसेज वाला कहाँ गया? ये तो सेकंड वीडियो हो गई. I would say impossible to plan and difficult to reach. But it's only possible if you are very busy and 100,000% committed to everything you do, when you dedicate your whole life to it. That's what I did. And I came here There's a longer video. and I said it on the first day. देख, ये सबसे पहली वाली वीडियो आई थी इम्पोर्टेंट वाली कि आई विल लीव द क्लब एट द एंड ऑफ द सीजन. ठीक है. Time and but obviously I can explain it, or at least try to explain it. And I love absolutely everything about this club. I love everything about YouTube पे 20 minutes यार. I don't think you can do YouTube to YouTube यार. I think Twitter पे तो आप फिर भी critique कर सकते हो. That I still take this decision probably will or shows you that I'm convinced it's the one I have to take. It is that how can I say that I'm running out of energy. I have no problem now. Obviously, I think I know. ये running out of energy वाला thing, man. I don't know what the scene is. ये running out of energy वाला thing really irks me as a fan. Klopp to replace team match. I don't know, man. What are your hypotheses? Okay, let's now just focus. I know everyone is sad. As Liverpool fans, you're hurt. As rivals, you are hurt. What are your hypotheses? Why do you think he's quit? If you've seen another video and उसमें information है, then please let me know. Yeah, मैं भी कर लूँगा. No, he said he's tired of working so much. He'll go to some national team now. All right. So basically, it's a थक गया बेचारा. हो गया.
I can tell you what I can't tell you what I can imagine, man. I can imagine. Yes, I know, man. All Liverpool fans will be super, super. And even though Klopp doesn't want the remaining games to be about him, he knows it will be, man. Because this guy, मैं क्या कहता हूँ? There are two types of coaches in the world, all right? Yeah, whole management is leaving. He is taking a sabbatical. Yeah. मैं क्या कहता हूँ टू टाइप्स ऑफ कोचेस वन आर मैनेजर्स एंड वन आर कोचेस कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फुटबॉल पिच पे रहना चाहते हैं कोच करना चाहते हैं आपके मोरिनियो हो गए आपका टेनहाग टाइप्स हो गए ठीक है कुछ लोग होते हैं वो आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन चेंजिंग द कल्चर ऑफ द क्लब नाउ लिवरपूल की हिस्ट्री इतनी अच्छी रिच है आपके पास एक पीरियड था जहाँ पे रॉय हॉडसन आए थे केनी डलग्लिश वापस आके थोड़ा सा रिवाइव किया था राइट ब्रेंडन रॉजर्स आए थे या ही इज टेकिंग अ ब्रेक ही लव्स फुटबॉल दैट्स द ओनली रीजन आई थिंक वही है एक टाइम पे आपका हो जाता है एक बर्नआउट वाली बात होती है ना मेरे हिसाब से वही होता है क्लॉप टू बारसा माई होल लाइफ ड्रीम वो ड्रीम ही रहेगा भाई ही इज नॉट ड्रैगिंग इट राइट नाउ समथिंग वेगन डिडंट डू एट वन पॉइंट आई थिंक सो टू मैन आई थिंक दिस इज समथिंग हम इस पे बात कर सकते हैं बट कुछ जब जब ब्रेंडन रॉजर्स गया था और यर्गन क्लॉप आया था आपको देखना चाहिए तो उसके अपॉइंटमेंट के बाद ही जो सी चेंज इन ambition in culture in connect with the fans मतलब he was the perfect manager मतलब कुछ मैनेजर्स बने ही होते हैं कुछ क्लब्स को मैनेज करने के लिए ठीक है मोरिनियो चेल्सी इज अ मैच मेड इन हेवन उस टाइम की रूथलेसनेस एम्बिशन इन चेल्सी एंड मोरिनियो की रूथलेसनेस वाज अ मैच मेड इन हेवन इट्स द सेम विद यर्गन क्लॉप मैन एंड आई एम एब्सोल्युटली मतलब शॉक्ड मैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इसको प्रोसेस भी कैसा करा जाए संकल्प कह रहे हैं हर्षवर्धन कह रहे हैं भरोसा आर्सेनल वॉक है भाई वो पीट देगा अब हमें हाँ लिंडर्स भी जा रहे हैं वो मैंने फेब्रिजियो का ट्वीट देख लिया था लिंडर्स इज आल्सो लीविंग आर्टेटा इज अपेरेंटली साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक अब तो हम कर भी देंगे आई थिंक अब आर्टेटा को नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे बिकॉज इट इंक्रीजेस चांसेस आई एम अ लिटिल वरिड कि हम इतनी जल्दी उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं बट मे बी वे वरिड कि कोई और क्लब आके ना ले ले उसको मजे दिला दिए क्लॉप ने सस अमन देखो यार आई मीन as rivals as a rival I am very disappointed that Klopp is leaving because it downgrades the product of the Premier League. Now imagine if somehow um, Pep signs a contract extension at Man City क्या होगा Premier League का it will just be like a de facto league man हाँ थोड़े बहुत अच्छे गेम्स आ जाएंगे मिड टेबल में थर्ड फोर्थ वाली टीम्स के लिए but it will just be Man City for the next 10-12 years. Do you think do you think now that Klopp is leaving, do you think Pep might also consider leaving? या फिर भाई I have no idea how this happened, but basically Klopp has left, is going to leave at the end of the season. Klopp has contract 2026 and he's about to extend his contract. Suddenly, what happened? Ayush, he just said, apparently, and people have watched the video, have said he's just tired, man. He is one of the greatest in our era. He is one of the most competitive मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम सब लोग खिल्ली उड़ाएंगे लिवरपूल की भाई 6 सीजन एक ट्रॉफी 6 सीजन एक ट्रॉफी ही इज वन द ब्लडी सेट in the Premier League. And there are very few managers who can boast of that achievement, who won the entire set. That is a career better than 99.9% of the managers in the Premier League and in world football. He has had a better career than 99.9% managers in the world of football. हमारा EFL कप गया यार still Pep better. Yeah, come on, man. There's a time and place for doing everything. Hey Siri, stop. There's a time and place to do everything. Um, if if somebody's father has been injured or whatever, bus Mohammed, I'll have to like ban you then. If somebody's father has been injured, you don't say कि मेरे बाप बेटर है. Come on, man. Because of Klopp, PL अभी तक फार्मर्स लीग नहीं फार्मर्स लीग तो बन चुकी है अब तो इट्स जस्ट प्रीटी मच ऑल द फार्मर्स लीग आप कैप्स में लिखेंगे आप बैन हो जाएंगे but who is next for Liverpool? I have a feeling they would have agreed something with Xabi Alonso. Stylistically, he's a great fit, yeah. Um, but he's also a young manager who's learning on the job. And sometimes being stylish does not work out, as Arteta has learned. You might learn from the best coaches, you might have an incredible footballing mind, but sometimes that is not enough. आप इसी सीजन लिवरपूल को देख लीजिए कितना एट टाइम्स दे लुक द बैक अगेंस्ट द वॉल एंड एवरीथिंग एंड क्लॉप की इन गेम मैनेजमेंट ऐसे पलट देती है सब कुछ को
Maybe Salah leaves as well. Of course, I think a lot of players who were considering extending their contract might actually leave. I think Trent will stay. I think, um, yeah, I'm telling you, he's never managing. तो जैसे हाँ आर्सेनल वाले फैंस के थोड़े ड्रीम्स हो रहे हैं ना कि भाई let's keep Daksh bhai, hear me out. Klopp to United, Klopp to Falana place in Dhamkana. No, I don't think it's gonna happen. Do you think Klopp overachieved? He was in a club. He definitely punched above his weight. I never call any achievement an overachievement. You get what you deserve. If Arsenal hasn't won a title in Arteta's 4.5 years, we've not. I mean, yeah, you've underachieved, but you also got what you deserved. I don't think any achievement is an overachievement. And the fact that he's won every trophy in England and he's set to win probably another one this season as well, right? Maybe he spoke to the owners and funds देने से बोल दिया तो mutually contract and कर देंगे. He said he's tired, so he might have been tired with management. See, here's the thing. I think what you're saying, Vedant, has a little bit of truth to this. Okay, सबसे पहले तो आई थिंक यस नेक्स्ट सीजन की प्लानिंग हो रही होगी. आई थिंक हिज विजन and the owner's vision would have been a slightly different. Um, right. Flexibility of agreeing on what the direction of the club might be. And maybe they would have said, आपको एक और सीजन थोड़ा सा you'll have to stick with it. आपको अपने चादर में पैर नहीं फैलाने बेसिकली. चादर अभी भी छोटी है. अभी हमने नई चादर ऑर्डर नहीं करी है. एंड उसके बाद आई थिंक इट हैज गॉन टू कि लाइक क्लॉप इज लाइक ठीक है आई एम लीविंग एंड लिवरपूल के ओनर्स ये नहीं बोल सकते हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही इज डन सो मच फॉर द क्लब एंड इन नो अदर सिनारियो एक्सेप्ट गिविंग क्लब द मनी ही वांट्स डज do the owners come out good. He needs rest, I guess. Yeah, man. I think see, I know Indian cop. I feel so bad for you. See, अगर आप इसको पूरी होलिस्टिकली देखो ना, you go from Liverpool 2.0. I am re-energized. I am 120% sure at the start of the season, Klopp said, I am re-energized. I believe in this project. I believe in this Liverpool. Something has had to go completely wrong in that boardroom in disagreement that Klopp has been like, I cannot do this underperform over matlab, over performance in fixed means for another season. I cannot keep risking my players over and over and over again. I cannot risk a 33-year-old Mohamed Salah always stepping up for me. I need players जो इस टीम को आगे तक ले जाए मेरे हिसाब से. ठीक है. एंड दैट्स द होल थिंग. एंड आई थिंक यही इशू है बिकॉज कहीं ना कहीं तो ही वॉज कंप्लीटली री इन्विगरेटेड विद दिस प्रोजेक्ट राइट. तभी तो रूमर्स आ रहे थे कि ही इज गोइंग टू एक्सटेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट अगेन. बट अजीब सी बात है यार. इन माई ओपिनियन ही इज टेकिंग अ ब्रेक एंड विल स्पेंड टाइम. ही इज डूइंग द राइट थिंग. ही इज लिविंग एट अ. मुझे बताओ क्या लग रहा है. हाँ यार. I completely agree, Sumesh bhai. I completely agree. अब मुझे बताओ क्या लग रहा है. He's gonna stay in a sabbatical, and when maybe Ancelotti leaves na Madrid, I think he's gonna go to Madrid. I think that's gonna happen. Because to be honest, I think he loves Borussia Dortmund too much to go to Bayern Munich. I think he loves Liverpool too much to manage in England. बचती है Spain and Italy. ठीक है. If he wants a sort of a, I mean, if he goes to Italy, he knows what he's going into. एक low money league जहाँ पे eyeballs कम है. But yeah, will he go to Madrid? I think it's the most likely destination. You might actually end up in Italy as well. At Barcelona, I don't know if they get their business in order. ठीक है. Already anti-Javi sentiment काफी ज़्यादा है. But then who does Barca get for 1 year is the question. I think honestly, iced Kraken, you know what? I had a feeling if Klopp is leaving, मेरा first था कि चलो Pep Linders manager बन जाएगा, but Pep Linders is also leaving. Something is weird out going on, man. Maybe Pep Linders can go to Barca. Who knows? He's not a Madrid kind of manager, brother. Don't worry about it. He will. I think he'll go to the national team. I think this is probably the most likely. If he goes into domestic management, I think he ends up in Spain. ठीक है. Oh, I had a very bad thought, man. Imagine he starts managing something like Girona, यार. सोचो, सिटी ग्रुप के पास एक जगह पेप, दूसरी जगह क्लॉप, मैन. मतलब इतना मेरे को तो मतलब बोलते ही मेरे को बुरा लग रहा है. पानी पी लेता हूँ मैं. बारसा कांट अफोर्ड हिम. एक साल में सिचुएशन बदल सकती है यार. Alonso or Tuchel to Liverpool. Tuchel, I don't know.
Klopp to DFB. Nagelsmann will leave after. Maybe, you know what? Maybe for the next World Cup, maybe Klopp wants to do that. I think, and I think if Klopp wins the World Cup with Germany, I think he'll be the GOAT manager then. He'll have something that no other Premier League manager has. ऑल द बेस्ट इडोलो कल एग्जाम है अरे प्लीज यार ऑल द बेस्ट सब बोल दीजिए गौरव को जल्दी से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो एंड कल रेनिसू के लिए भी बोल दीजिए रेनिसू का भी कल है हाई चांसेस विल गो टू जर्मनी देखते हैं यार मे बी जस्ट गोज बैक टू माइंस मे बी जस्ट ही जस्ट गेट्स आउट ऑफ द लाइमलाइट यू नो Klopp will go to German national team. This mostly looks out. Anyways, I think going to Madrid would be a dhoka to Liverpool fans. He would never do that. I, I I can understand where your sentiment is that, but I don't think that sort of rivalry exists between. I mean, yes, there are things between Madrid and Liverpool, but come on, man. I don't think it's that. Now the players will win the league for club. They have to, man. They should. And you know what? I am sure the players found out about this before their match against Fulham. अनलेस अगर उसके बाद भी हुआ तो फिर तो मतलब जितनी ग्रेजुअल चीजें होती हैं उतना कम शॉकिंग होता है उतना प्लान्ड आउट होता है ये तो ऐसे आगे जैसे सडनली धूम हो गया ओ यू मिस 23rd को अरे आई एम सो सॉरी हैप्पी बर्थडे टू यू गौरव बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू पर्सनली मेरी तरफ से आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ फंड्स एंड एम्बिशन देखते हैं देखो ऑल ऑफ दिस विल कीप बिकमिंग क्लियरर एज द डेज गो बाय अब सारा वो मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ एरर्स कम टू एन एंड एरर्स कम टू एन एंड फलाना ढमकाना या मैन दिस इज ऑल गोइंग बट आई कैन नॉट या कुछ किसी ने कहा डू यू थिंक जेरार्ड कम्स बैक एंड नहीं जेरार्ड इज नॉट कमिंग आई एम सो सॉरी मोइनुल मैन आई एम सो सॉरी दिस इज हैपेंड दक्ष भाई मैं आपसे अरे बस 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 ये न्यूज लिवरपूल स्टाइल ट्रांसफर जैसी थी आज लिंक कल साइनिंग होगी हाँ यार ETH my astrologer by exactly. Gerrard to Liverpool. Here we go. Imagine Klopp looks tired during the interview. I think he looks more devastated than anything. You know, he's just like, "Kya batao?" And you know what? What do you think he'll say? What do you think he'll say? He'll say ki, like owners have effed me over. He'll say the owners haven't backed me. He'll say this and that. Nah, nah, nah. Once Barca, we are back in business. Never had a loss in income. 800 million plus. अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है दिल गार्डन गार्डन हो गया नो एज देखो यू कैन ऑल्सो बी सैड अबाउट क्लॉप लिविंग कैसे हो भाई नाइस टू सी you can also see you can also be sad about Klopp leaving, but it's also a huge opportunity for every other manager out there. You know, there's Arteta, there's Ange, maybe Poch if he manages to stay in job and Chelsea recruit like Osimhen and other good recruitments in the summer. Ten Hag with this new Ineos management. Ineos is doing such positive changes in everything. So maybe Man United, it's basically one of the biggest competitors in the league, will definitely be weakened if not out. एक ट्रांजिशन फेज होगा यार एक छोटा सा ट्रांजिशन फेज तो प्रीमियर लीग में होना चाहिए अब अलोंसो आएगा ना अलोंसो आते ही क्या करता है जो उसने लेवरकूसन में किया क्या वो कर पाएगा ऑफ कोर्स विल बी अ ह्यूज थिंग कैन ही डू इट मे बी you already told the board in November. My God. Salah to Saudi next. Yeah, maybe. हो सकता है. मेरे हिसाब से यार अब I think he will also leave, right? He will be like, ठीक है यार मतलब I came for this manager, I'm leaving. And you think about it, right? Klopp brought in Fabinho, he's left. Henderson left. Firmino left. Mane left. Thiago is perpetually injured, so I won't count him. राइट ट्रेंट को उसने दिया था he's pretty much set up लिवरपूल फॉर द फ्यूचर जब कर्टिस जोन्स आपके कॉनर ब्रैडली क्वांसा मैकैलिस्टर ये सब लोग आ गए हैं राइट तो मतलब क्या ही अजीब सी मतलब I don't know man Xabi Alonso is coming because why their fans are mourning because he's not Klopp man and this is what I'm saying stylistically you could be the next best manager everyone can be like hi he's a great manager nobody can replicate experience bhai nobody can replicate experience to be honest nobody can replicate experience and that's what I'm saying man ये आप कितना भी एक्साइटिंग मैनेजर ले आओ पॉटर एक्साइटिंग मैनेजर नहीं चला उस टाइम ब्रेंडन रॉजर्स एक्साइटिंग मैनेजर नहीं चला
सब कह रहे एक पॉइंट पे था डिजर्बी टू मैड्रिड, अब डिजर्बी का एक ऑफ सीजन आ गया, कोई बात नहीं कर रहा है. शाबी अलोंसो इज एन ग्रेट, क्या स्टीवन जेरार्ड इनविंसिबल हो गया था आई थिंक इन द स्कॉटिश लीग. चलो स्टीवन जेरार्ड को प्रीमियर लीग लिया, विला जैसे क्लब पे अच्छा कर देगा, देखो क्या हो गया उसका, राइट. एंड सो एक्सपीरियंस कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड यार. एंड मेरे हिसाब से आई डोंट नो मैन, आई मीन शापी अलोंसो विल बी अ गुड मैनेजर, बट वही है. एनीवेज, एक सुपर चैट आई है राघव की. थैंक्स अगेन राघव फॉर द कंट्रीब्यूशन. वी ऑल मस्ट टिप आवर हैट्स, पे रिस्पेक्ट टू द मैन दैट वाजंट जस्ट अ मैनेजर बट द बॉस. द utmost respect for what he did at Prem and Pool. Yeah, honestly, I think there is, when Klopp was available to hire nine the Premier League, Arsenal fans were disappointed कि भाई we did not go for him, we chose Emery. I think United के साथ इसके links आ रहे थे. I think Klopp was linked with everyone at one point of time, and everyone really wanted him because everyone knew what happened. There is a video of when he was leaving Dortmund. There was a Liverpool reporter who was interviewing him, got on his knees in front of him and said, "Please come to Liverpool Football Club." Now Liverpool will struggle after just 2 seasons. I don't know, man. I mean, all of these predictions are in the air. Who knows? Xabi Alonso पहली बात तो पता भी नहीं agree हुआ या नहीं. But अगर हुआ है, क्या होगा? Arteta Pep next big rival. I don't know. Don't count out Ange. Don't count out Ten Hag under this new ownership. You never really know. Ownerships बड़ा transform कर देती है clubs को. You never really know. जावी की नेक्स्ट डेस्टिनेशन भाई नहीं करेंगे. लिवरपूल शायद नेक्स्ट मैनेजर के लिए सोच लिया है अच्छे से, इसलिए मेरे को भी ये लग रहा है डब्बू कि लाइक कहीं ना कहीं देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट और अ डायरेक्शन दे हैव टेकन. दैट इज व्हाई अगर अगर नहीं होता, अगर ये इतना सडन होता कि ये परसों की बात थी और अब चला ये हो जाएगा, देन आई थिंक ऐसी चीज हो जाती कि वो पेपलेंडस को ही कर दे. बट पेपलेंडस भी जा रहा है, ठीक है. एंड clearly Pep Linders also does not want to work in this. So let's say I'll be very interested to see where Pep Linders also goes and how his career pans out, because Pep Linders is also a very respected coach in the world of football. बस अब Pep चला जाए तब थोड़ा चैन आएगा भाई. Pep also leaves ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. सबसे ज्यादा मातम में तो उस दिन सिटी फैंस होंगे. बट या अभी पेप के बारे में आज बात नहीं करेंगे. इट्स बेसिकली लिवरपूल डे टुडे. मोरिनियो टू लिवरपूल तो नहीं होने वाला. That means either of Mourinho and Alonso. Mourinho to Liverpool is not going to happen. He is not a Liverpool manager. You know, like I said in the earlier, कि कुछ managers are destined to manage at some clubs, right? And वो ही है. अगर मान लो आज क्लॉप की जगह मान लो आर्टेटा had been fired, आर्टेटा said I'm going to leave the club at the end of the season, whatever. ये जाबी अलोंसो वाले लिंक्स आर्सेनल के साथ आ रहे होते, right? या फिर कोई बोलता है एलेग्री ले आओ, या जैसे रेनिसू लाइक्स फ्लिपो इंजागी अलॉट, सॉरी सिमोन इंजागी अलॉट, वो कहते हैं सिमोन इंजागी को ले आओ. तो बहुत सारे हैं यार. बट आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम लिवरपूल फैंस हाउ. अब pretty much I think it's been an hour since the news broke. What is your now, have you, at the moment I don't think I would work as a manager ever again. Bhai crazy man, if that is how deep it is for him. Bhai, this is one of those times, the last time I expected like a super consciousness close to this was when Kobe Bryant announced his retirement. Kobe Bryant ने जब announcement किया था, everyone was like, what the hell has happened? This guy is quitting. This guy, the never quit guy is quitting. The most passionate guy is quitting. Same चीज है यार. यार यूएफसी अभी छोड़ दो यार ना. क्या है, क्लब टू बारसा नहीं होने वाला. डू यू थिंक ही हैज सम ह्यूज मेडिकल इशू? हमने प्रिडिक्ट तो किया था, मैं एक स्पेकुलेट तो किया था इस पे, बट आई डोंट थिंक सो मैन. स्केयर टू फेस देम इन द फाइनल ईयर, वो तो पहले से ही होना चाहिए था. बट अब तो और भी देयर इज मोर रीजन. Klopp is one of the very best coaches in the world. He has always managed to influence the club very word. It's big news. Yeah, man. Genuinely. It's crazy. I honestly have no idea. Dekho, this thing that Klopp had told the players in November, brother, कभी कभी ऐसा होता है ना. I think it's a very, I don't think it's true basically. Why? क्योंकि ऐसे जब नवंबर में बता देते ना कुछ प्लेयर्स ने तो अपने एजेंट को बोल दिया होगा कि भाई ये मैनेजर निकल रहे, मुझे भी नेक्स्ट ईयर इधर से निकालो.
एंड वो एजेंट ने किसी जर्नलिस्ट के कान में तो खुसफुस खुसफुस कर दिया होगा, ठीक है? एंड अगर ये सारी चीजें हुई हैं, देन आई वुड से आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, दिस इज, आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड ब्रो, आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड कि दिस इज हैपेंड. Yeah, yeah, maybe. Who knows? Whatever has happened. But the passing of the baton has to be smooth, so team goes ahead and challenges for everything. You will have some pieces. I think Allison will stay. I don't think he'll stay beyond this contract. I don't know Allison ka kya scene hai. I think Allison, Virgil will stay. They will steady the ship. I think Mo will leave. And I think Trent will be the one carrying this team aage in the future. I think he'll join the jump. I think so. Yeah, I think that's Nevermore. That's the common consensus. Ki yaar, he is going to move to the German national team. Tuchel relations with Bayern players has not been that great, and Klopp is a German. You know what I mean, bhai. I think he has too much love for Dortmund, man. I think he has too much love for Dortmund to go to Bayern. If he goes to Bayern, I'll be shocked. I'll be super shocked. Alisson, Trent, VVD will stay. I agree as well. And देखो ऐसा नहीं है कि when Wenger left Arsenal, na, we were in this very weird position. We had players who had aged and everything. But for Liverpool, na, number one, their aged players are great financial assets. So Salah leaving for Saudi, they'll definitely get like 100 million के आसपास. ठीक है? Plus you have a bunch of young players. अब इस young player plus इतना सारे पैसे को कौन मैनेज कर पाएगा? दैट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इंटरेस्टिंग. कौन से मैनेजर को आप इतने पैसों के साथ ट्रस्ट कर सकते हो, स्पेशली जब आपको पता है आपके ओनर्स इतने स्टिंगी हैं, आपको पता है आपकी रिक्रूटमेंट टीम उतनी अच्छी नहीं है अभी के लिए. आई कैन अंडरस्टैंड मैन. हर गेम इतना इमोशनल होने वाला है. एंड इवन यू नो व्हाट, स्क्रू अबाउट द फैक्ट कि लाइक लिवरपूल फैंस इमोशनल होंगे. ऑफ कोर्स दे विल बी. आई विल से दैट every ground he goes to from this point of on, when he comes to the Emirates in February, he is going to be lauded. He will be applauded and everything. देखो यार, you will have to count. Klopp has made the Premier League better. कुछ भी कहो, Klopp has made the Premier League better, much much better than it deserves to be. ठीक है? सिर्फ पेप होता, Premier League would have been a boring product. Of course, City fans खुश होते, ये सब होता. बाकी लोगों को एक दो glimmer of hope मिलती. But and I will just say this to Liverpool fans. When Kobe retired, I was shocked. I cried. And all I did for the remaining NBA season was I just savored every moment. Manas ने भी I think tweet ऐसे ही कुछ किया. Just savor every moment. Don't think हाँ मतलब it's a very cliched meme. Don't cry because it's over. Smile because it happened. And that's all I'm saying. Savor every moment. Enjoy everything. Follow your team. Support your team. I don't know, do anything that would say, just I would say it might sound very silly, but even if you could record a 20-30 second video and just tag Liverpool FC in that, a special message from you to Klopp, आप वो भी कर दो, and that's it. You just have to savor every moment and be grateful for this man. I wish Arsene Wenger को एक ऐसा sort of end मिला होता on his terms. When Wenger was leaving, आई वॉज नम. मैं तो ऑनलाइन आया, मैंने कहा अगेन, जैसे मैंने आज क्लॉप के लिए ट्वीट किया था, व्हाट WTF, आई ट्वीटेड दैट फॉर वेंगर एंड दैट वाज इट. आई नेवर recovered emotionally from Wenger leaving in the manner he left. I wish he left a little bit more on his terms. And वही है, just savor every last moment of his. जब उसका था, हाँ, I know भाई, I completely understand and I feel भाई. Jurgen Klopp, man, what a guy. Jurgen Klopp, what a guy. He is He is the embodiment of passion. He is the embodiment of competitiveness. He is the embodiment of how to be a good manager. He is no controversy. ठीक है? Loves his players. If the fact that there is a deliberation of thought when people think कि पेप और क्लॉप, आप अगर आपके क्लब में एक मैनेजर को लाना होगा तो आप किसको लाओगे? The fact that a lot of people will say Klopp because they know Klopp will perform. No matter what it is, he will get the best out of these players. Of course, Pep is a GOAT manager, of course.
बट द फैक्ट दैट क्लॉप जैसा बंदा अगर हमारे क्लब में आ जाएगा तो आप अभी भी पूछ लो. देयर इज अ रीजन सो मेनी फैंस आर सेइंग गेट क्लॉप इन माय क्लब. बारसा, मड्रिड, बायर्न, आर्सेनल, हर एक में. या मैन इट्स दक्ष भाई, आप आयरलैंड में पढ़ने के लिए. हाँ भाई, मैं आयरलैंड में पढ़ने के लिए गया हूँ. कैन यू टेल मी द कॉन्टेक्स्ट? आई यार सो व्हाट द वीडियो आई वॉच्ड बिफोर आई वेंट लाइव वाज, एक सेकंड बॉयज. The video I watched, oh, god damn it, guys. I'll एक second दे दो please. Yeah, and so heartbreak, yeah, I completely understand. Uh, will Klopp be deemed as a successful manager if in Spain if he achieves the same in Madrid, Barca like he's achieved in Liverpool? I don't think Klopp needs any sort of stamp of approval from us. His legacy is secured, guys. He is going to go down as one of the greatest managers in the Premier League. देखो, सर एलेक्स ने 13-14 ट्रॉफीज जीती हुई हैं. ठीक है, इतनी सारी. ही इज वन प्रीमियर लीग्स विद मैन यूनाइटेड, ही इज वन द ट्रेबल, ही इज वन दिस एंड दैट. You need to stay in management at a club for 25 years to slowly see through all the cycles and then win these things. Klopp has been at Liverpool for not as long, 8 years, 9 years, I think. And so you have to understand that he has achieved what he can achieve in this. The fact that he's completed the set, his legacy is secured. No matter what happens. मैं कहता हूँ he goes to, I don't know, Dusseldorf and decides to manage in Germany. 9 years he's been there. Right? He decides to go to Dusseldorf and manage. तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि like his legacy is secure. He has nothing to prove to anyone. क्या और prove कर लेगा Klopp? Exhaustion, I don't know. एक कुछ कह रहे हैं exhaustion है, कुछ कह रहे हैं owners है. I don't have any strength to take this early. Nothing to say. I'm totally broken, bhai. Google Baba, I am so disappointed and devastated for you, bhai. My sympathies go to you. Give us the time. We can win at least one trophy in the next 4 years. Yep, this is what he said when he came in. He said, "Believe, never stop believing," and that's it. The guy just thrived on belief from his fans, belief from his players, and that's it. He ended up winning every trophy in the Premier League. He said we'll win at least one trophy in the next 4 years. He ended up winning every trophy which you can win as a manager. Uh, क्या ही पता यार. ट्रांजिशंस आर नेवर स्मूथ लाइक दैट. जब भी एक मॉन्यूमेंटल मैनेजर लीव करता है ना, कभी भी ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता है. राइट? If you look at Man United post Fergie, the transition has never been smooth. Maybe with Eric Ten Hag, they've hit the nail. ठीक है? If you look at Arsenal post Wenger, we got it wrong once before we got it hopefully right with Arteta. Agar Arteta also does not work out, then we got it wrong twice to replace Wenger. Right? Look at Chelsea. Mourinho का peak with that Drogba वाली team के बाद maybe Conte was the one who was great. But it's never been easy because वो तो चलो Chelsea का culture and everything and that's fine. Spurs, right? Never had great matches. And finally, after Conte, Mourinho, Nuno, um, Poch looked okay, fine, fair enough. And sort of, all these things, Redknapp, ये सब. You look at all these clubs, बड़े मैनेजर जाने के बड़े मैनेजर जाने के बाद कभी भी इट्स नेवर इजी. राइट? बहुत कम क्लब्स में होते हैं. मे बी शायद से रियल मैड्रिड में होगा, बट they've also had their misfires in Lopetegui and everyone. बारसा में देख लो आप. राइट? पेप के बाद, टीटो के बाद कहाँ आपने टाटा मार्टिनेज, कीके सेतियन, चलो लुइस एनरिके को अब रिविजनिज्म हो रहा है कि भाई वी मिस लुइस एनरिके, बट लुइस एनरिके को इतनी गाली पड़ती थी, अर्नेस्टो को इतनी गालियां पड़ती थी. सो या जिडान टू लिवरपूल, व्हाट इज योर थॉट? भाई जिडान देखो, जिडान is a manager who left Real Madrid after three-peating.
three-peating the Champions League. He knew when he had to leave, and he knows when he will pick a job. Zizou is never in a rush for jobs. He know he will get a job one day. ठीक है, जीजू इज नेवर इन रश. तो जो बंदा ना इतना कैलकुलेटेड होता है अपने करियर डिसीजंस को लेके, ही विल नेवर मेक अ रॉन्ग मूव. एंड सो इफ ही फील्स दैट लिवरपूल इज नॉट द राइट प्लेस, ही विल टॉक टू क्लॉप. अगर उसको कंसिडर भी करना, he'll talk to Klopp, he'll talk to the owners, and then he'll be like, नहीं, because he's not. भाई, if he decided that Madrid is not good enough for his ambitions, then Liverpool तो बहुत पीछे है. I've already cried today. It'll kill me every match. He's just savor it, Rishabh. I know it's very difficult. It's very difficult because हर एक game is like a tick down कि ये होगा. I think Klopp, the best gift you can give to Klopp, like he said in one of his videos, is just support the team, support him, love him, cherish him, and Klopp पे बाकी छोड़ दो, because Klopp will definitely deliver you a trophy this time. Thank you so much, yaar. 13 के हो गए. I'm so happy. Uh, will Alonso take up this job? He seems like the most obvious candidate, but you never know, man. Funnier things have happened. Funnier things have happened. Uh, why do you not consider Klopp to Barca? I just don't think Barca is in this place right now where Klopp can thrive. Klopp requires some world class talents to exist, which I admit Barca has. But you also require a good structure of, and I think अगर क्लॉप की टायर्ड वाली बात सही है, इट्स प्रॉब्ली ट्रू बिकॉज ही इज जस्ट टायर्ड ऑफ वर्किंग विद इन दीज मीन्स. या दैट्स इट मेरे हिसाब से. एलेक्स 70 पे रिटायर हुआ था. क्लॉप का एनर्जी वाला कमेंट मेरे को तो थोड़ा फेक लग रहा है यार. पीपल आर डिफरेंट, यू नो. It could be a medical thing. It could be that people just get tired and everything. It just happens, all right. Sir Alex was different. Klopp is different. Their clubs were different. Their motivations are different, right? Klopp managing Germany, Pep managing Spain, Zidane managing France. Imagine if that happens, but I don't think it will. Yeah, I think he can. I definitely think he can. आज मैच है हमारा विला से एंड सिटी वर्सेस स्पर्स. ओ हाँ, आज तो फुटबॉल भी है. Klopp is Liverpool. I will agree with this. If you had to, if I say, imagine the perfect Liverpool manager, Jurgen Klopp will definitely be in the mix in your head. Yeah. So I am completely shocked, man. What has happened? Why is this happening? I cannot explain. I cannot understand. लोगों ने videos वगैरह बना दी हैं. Unai Emery खोला. I don't know, man. What if the season will be the last time we see Liverpool in the top three? Nah, you never know. Again, this is all speculation. Klopp has done the job. Yeah. The thing is, you're just never ready whenever these things, are about to happen. मतलब every Liverpool fan you at some point of time that Klopp will leave. But usually बताओ ऐसे न्यूज़ ना एक साल पहले आ जाते that at the end of next season, मतलब अगर अभी 24 चल रहा है, तो at the end of his 25 season Klopp will not renew his contract and therefore he is going to leave. तो आप एक साल फिर निकाल देते हो. एक साल आपको पूरा लग जाता है करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए. एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन लिवरपूल फैंस विल बी एट पीस. बट आज जो ये झटका मिला है ना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि लिवरपूल फैंस कैसे करेंगे. नागल्समैन, आई डोंट नो मैन. अभी तो कुछ भी नहीं करा. अभी लेट इट ऑल बी अबाउट क्लॉप. नेक्स्ट वाले स्टेप्स अभी हम नेक्स्ट 2-3 days में हो भी जाएंगे. इट विल ऑल कम क्लियर. नेक्स्ट ईयर लिवरपूल इज फॉर सेल. I don't know. If Liverpool was for sale, then letting Klopp go will be the craziest thing. And I'm still telling you, some of the teams being mentioned here, I think Klopp has a higher chance of coming back to Liverpool than mentioning those teams. Arsenal, he'll never come to a Premier League club. So सारे English clubs को तो निकाल दो. ठीक है? Will he go to Spain? He can. Will he go to Italy? He can. If he goes to Germany, it's either for the national team or he's going back to one of his old clubs. But I think it's so unpredictable to guess. Yeah. ये सारी चीजें अभी तो सोचोगे ही नहीं आप लोग. राइट नाउ तो ये तो आप बोले भाड़ में जाए कौन आएगा अभी, ये मैनेजर का मैं क्या सोचूं. भाड़ में जाए शाबी अलोंसो. मैं तो कहता तुम बिल शैंकली को उठा के ले आओ यार. कबर से रेजरेक्ट कर दो, रीन्यू कर दो. बट मेरे को लेट मी प्रोसेस दिस यर्गन क्लॉप वाला थिंग. अभी तो सदमा है. एग्जैक्टली. भाड़ में जाए अभी क्या है. भाड़ में जाए सलाह जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा. अभी तो लिवरपूल फैंस आर जस्ट मेकिंग सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस. आप लोग समझ नहीं रहे हो. ठीक है. फॉर अ लॉट ऑफ अस. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम
Klopp and Pep. I don't think any manager has that sort of connect with this fan base as of yet. ठीक है, every manager is divisive in some way or the other. A section of them wants out, a section of them wants in. Pep, City fans want Pep in 120%. Liverpool fans want Klopp in 120%. Apart from these two, I don't think there's any other manager जो divide करता है. ठीक है. एंड सो आप लोग समझ नहीं रहे हो कि आज आर्टेटा चला जाएगा, दुख होगा मुझे ऑफ कोर्स, आई विल बी डेविस्टेटेड, बट नॉट टू द पॉइंट कि यार एक यूनिवर्सली बिलवड मैनेजर जा रहा है, राइट? एंज ऑफ कोर्स, बट आई थिंक एंज इज अ बिट टू अर्ली राइट नाउ. सिमियोने एज वेल, यस सिमियोने, राइट? सो फॉर a lot of our clubs, if our manager leaves, dukh hoga, sad ho gaye 2-3 दिन, okay, next who, then you go into planning mode. For Liverpool fans, it is not possible right now. For Liverpool fans, it is almost impossible to think, oh no, who next? Right now, it's just about the fact, bhai, we should trust the next manager, whatever happens. It's very difficult, to fill big shoes. That is why the saying is, ki like, you need a lot of courage to fill big shoes, yeah. Um, वही बात है. कौन क्लॉप, not only you have to replicate Klopp's success, but you have to replicate his connection with the fans. You have to accept, you have to be accepted by the fans. क्योंकि काफी सारे आए थे, ब्रेंडन रॉजर्स आए थे, रॉय हॉडसन आया था, किंग केनी व्हेन ही केम बैक. चलो केनी डैलग्लिश तो लेजेंड ऑफ लिवरपूल है, उनको तो एक्सेप्टेंस मिल भी गया था, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन दे लिवरपूल फैंस न्यू केनी डैलग्लिश का जाने का टाइम हो गया. एंड सो ये जो क्लॉप की रिलेशनशिप विद लिवरपूल थी बड़ी यूनिक है. ठीक है, बहुत कम होगा. It's just like when Tuchel got sacked, even bigger than that. But as much as Chelsea fans loved Tuchel, he was there for 2 years and he was getting to build something. But मैं तो कह रहा था towards the end of that Tuchel era also, na, before he got sacked, a lot of Chelsea fans started turning on him also. That's it. Exactly. No one can replace him. It's like that question जब हम ट्रांसफर्स की बात करते कि साला को लिवरपूल कैसे रिप्लेस करेगी, कोई रिप्लेस नहीं करने वाला साला को. अब तो एक नया सिस्टम ही बनेगा, एंड दैट्स द थिंग, नोबडी विल अचीव व्हाट क्लॉप अचीव्ड विद लिवरपूल. इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीटली न्यू थिंग नाउ. um एग्जैक्टली नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस क्लॉप चाहिए, एंड दैट्स द होल थिंग मैन. um I know, Harshit. I know. If you're a Liverpool fan, I completely agree. And trust me, you can throw in the best names out there in manager. You can even say Pep Guardiola will come to Liverpool. Nothing will ever soften the blow of Klopp leaving. मैं वही कह रहा हूँ. As us, हम लोग नहीं कर सकते. आर्टेटा के बीच इतनी डिवीजन है, टेनहाग के बीच इतनी डिवीजन है फैंस में, ठीक है. पोचेटिनो को लेके इतनी डिवीजन है, एंड चलो ठीक है, यूनिवर्सली लाइक्ड है. Every club you think of, every club you think of, you will never be able to relate with what's happening over here. But yeah, it's all over. Anyways, last में एक बार Twitter check कर लेता हूँ, and then we'll see if there's any last things we can talk about, and then we'll end the stream, man. Xabi Alonso to Liverpool, Arteta ka contract extension, Jurgen Klopp, I told the club already in November I'm leaving at the end of the season. I'm running out of energy. That's the truth. I love absolutely everything about this club, and I know that I cannot do the job again and again and again and again. Um, what a guy. His entire tenure at Anfield spent fighting against an opponent that did not. अच्छा चलो ये तो थोड़ा सा अलग ही लेवल पे चला गया. Um, Bringing home, मैं एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को, then we'll just end it on a meme. Yeah, बस bring him home guys, bring him home. It's time for the prince to return. uh, अच्छा, आपको मैं चाहिए हूँ तो वो तो नहीं हो पाएगा. क्लब अपना डिसीजन वापस ले सकता है क्या अगर साइनिंग्स मिल जाए तो? आई डोंट नो. इमेजिन इफ द ओनर्स टर्न नाउ. बट मुझे नहीं लगता, लिवरपूल ओनर्स इतने स्टिंजी होते हैं ना यार, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा. um, Klopp will not come to Liverpool. He wants a team according to him. यार देखो, पेरेज
पेरेज़ की भी लेगेसी सक्सीड हो गई है, ठीक है? तो अगर आप क्लॉप जैसे मैनेजर ला रहे हो, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग, ऐसा तो नहीं है। आई एम अ बार्सा फैन, आई रिस्पेक्ट क्लॉप मोर देन पेप्स मैन सिटी। अच्छी, चलो अच्छी बात है। इज़ देयर एनी अदर मैनेजर विद अ सिमिलर सिस्टम लाइक क्लॉप? लाइक रनिंग, ये देखो, प्रिटेंडर्स तो बड़े सारे हैं। पीटर बॉस ऐसे हैं। टेर्जिच, जो डॉर्टमंड हैज ऑलरेडी ऑलवेज ट्राइड टू हायर क्लॉप लाइक मैनेजर्स, ठीक है? ऑलवेज इज लाइक हायर क्लॉप लाइक मैनेजर्स डॉर्टमंड ने, बट देव नेवर वर्कड आउट टू। आपका मार्को रोज, टेर्जिच, पीटर बॉस। पीटर बॉस अच्छी है। पीटर बॉस इज अ गुड मैनेजर, बट ही इज एट पीएसवी राइट नाउ। आई डोंट नो। देखो यार, कैंडिडेट्स के बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। लोग कहेंगे कि शापी अलोंसो इज द मोस्ट ऑब्वियस रिप्लेसमेंट। आई थिंक देयर आर प्लेंटी अदर्स आउट देयर। I think Liverpool will go for a young manager, a manager which is up and coming and not an established manager. That does not mean a manager with no experience. They will always prefer a manager with experience because this is Liverpool Football Club at the end of the day, right? Uh, उन्होंने जब क्लॉप को लिया था, क्लॉप had already years of management experience in Mainz, in Dortmund, and with Dortmund he had won something. Xabi Alonso is yet to win something. Although he does seem like the most obvious candidate, there are others मेरे हिसाब से who are also there. किसी ने इंजागी लिखा, yes, Inzaghi is also there. Um, I think there could be some Premier League managers that would be keen to join Liverpool as a club. Could De Zerbi be there? I don't know. Maybe, maybe not. Um, could somebody like Arne Slot be there? Who knows? Peter Boss? Who knows? बट ये सारी बातें बात की हैं। अभी तो घंटा फ़र्क पड़ता है कि कौन जाएगा अभी लिवरपूल। अभी एज़ लिवरपूल फैन्स, हैंसी फ्लिक, या श्योर। एज़ लिवरपूल फैन्स, इफ यू आर अ लिवरपूल फैन, savor every moment. Take today off. Take today off and process what's happened. Look back at the memories. Enjoy it. Cherish it. I'm sure at some point Manas and Nidhi will come online as well. They will give their own opinions and everything. Um, उनकी स्ट्रीम पे जाओ, share the good memories and everything, and that's it. Then slowly and eventually, when this reality starts setting in, then you can go into that planning phase. Today there is no obligation to go into the planning phase, but मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है? I've been watching Arsenal since 2001, 2002. For the first 3-4 years I had zero context of football. मुझे तो घंटा फर्क पड़ता था चैंपियंस लीग क्या है, ये सब क्या है। जब वेंगर लेफ्ट ना, all I did was watch the Invincible documentaries. I watched our most famous matches. I watched all his interviews. And, Wenger stopped being an ex manager for me for Arsenal. Um, क्लॉप ने हमें सिर्फ बुरी मेमोरीज दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। क्लॉप हैज ऑलवेज spanked us, man. Um, all I did was just watch his interviews, and Klopp and Wenger stopped being an ex manager for me. एक कहते हैं, if you listen to any Arsenal fan who's been watching Arsenal for a long time now, Arsene Wenger na sort of just graduated from a manager to हम सबका collective father figure. We all respect him. We all love him. There is in no scenario a time when we think anything bad of Wenger. Um, Klopp's the Wenger of Liverpool. Agreed. The guy changed Liverpool. Wenger changed Arsenal. And I can still remember that Mercy Arsenal वाली जो गोइंग अवे थी उसका जो फाइनल वर्ड्स थे, his last goodbye broke me. I cried that day. Anyways, it sucks, man. If you're a Liverpool fans, hugs to you. If you're a rival fan, we should respect what Klopp has done. Of course, it's a big opportunity for the rest of us now. It's a competitive sport. आपको हर चीज का एडवांटेज लेना पड़ेगा. And if that means there could be a new challenger, if that means Pep might be leaving, who knows? Who knows? Sporting Schmatke is also leaving. All right. Um, yeah, you can be sad. I am sad for my friends. I am sad for Liverpool fans I know in my Discord and everything. Memberships are open. आप join कर सकते हैं. Um, yeah, I'm. I'm.
very sad about all of these things. And it reminds me, it really, really reminds me जब Wenger जा रहा था, and it was a devastating thing. So I can sympathize. I cannot relate because you have seen Jurgen Klopp from the beginning to the end. I caught Wenger in his best years and I saw him slowly decline. And so that made it all the more painful. Yeah, I will just say there's definitely a direction that Liverpool are taking. What's next for Liverpool is anyone's guess. But yeah, guys, 366 of you are here. Thank you so much for joining in. 370 likes again. Let's push to a 400 likes. I am back now. I was working on a project for my PhD, तो मैं काफी दिन से absent था after that watch along. But now I finished my project and I am free. So yeah, if you can show some support, बहुत अच्छा होगा. United fans are happy, of course. I'll really really appreciate. मैंने पूरी stream पे कोई भी promotion नहीं किया. Never asked you to like because I wanted you to hear my words. I wanted to listen to you. मैंने कोई स्लो मोड वगैरह नहीं लगाया because I want people to express as much as possible. In return, if you can just like this video, तो कर दीजिए. Liking this video increases the reach. अगर एक बार reach decline पे आ जाती है तो चली जाती है. Also, even though इसमें possible नहीं है, but if you are somebody who's just watching and you're not subscribed, subscribe to the content. Most people who watch my content are not subscribed. 52% people of the people 52% of everyone who watches my content is not subscribed. That's devastating. That अगर इतने views आते हैं, इतनी growth होती है, I'm still missing out on 50% of the people. So let's go. I think Pep might not leave low कह रहे हैं. I think he will think about this now. I think he will think about this. Pep तो is the बंदा who takes loves taking sabbaticals, who loves thinking कि मेरा इधर काम हो गया मैं निकल जाऊंगा. क्या होगा तो पता नहीं. हाँ रिटायर तो नहीं होगा. बट आप सोचो ना, इमेजिन भाई, सोच ना केशव, अगर हम वेंगर को कहीं और मैनेज करता हुआ देख लेते हैं आर्सेनल के बाद, मेरा तो दिल टूट जाता. Of course man, you have to respect great people, you have to respect great people. Nobody knows, and I don't think right now Liverpool fans care who is the next manager. They just want to shower their current manager with all the love and affection, and I think that's fine. And I think that should be the one. That should be the way forward. Like the video, subscribe if you're new. As things unfold, we will speak about this again. Maybe we'll do a chill stream. Who knows? We'll do a chill stream at night, or maybe on tomorrow. Let's see. Yeah. Uh, Eric was right. Eras come to an end. The thing is, उसमें उसका कोई हाथ नहीं था. अनलेस क्लॉप ने बोल दिया कि देखो यार ये तो कंपेटिटिव है ही नहीं लीग, ये लीग ही ऐसी है, मुझसे तो नहीं होगा. यूनाइटेड और टेनहाग भी कुछ नहीं कर रहे, अर्टेटा आर्सेनल भी कुछ नहीं कर रहे, मैं तो निकल रहा हूँ. तो देन यस, यही हाथ हो सकता है एरिक टेनहाग का. मड्रिड हैज कार्लो, वो भी चला जाएगा एक दिन भाई, वो भी चला जाएगा एक दिन. एनीवेज, as a Madrid fan, I admire Jurgen Klopp despite the fact we prevented him. अरे भाई, come on man, you can give respect without being, देखो मेरी गांड कितनी मोटी है, right? You can just say respect to Klopp as a manager even though हमने उसको ये जीतने से रोक दिया. Come on bro, थोड़ा सा respect, जैसे मोरिनियो कहता ना, respect, respect. um yeah, I don't think that's Gary. He's never managing anyone else. He's never managing anyone else. Anyways, I want Klopp to retire. His legacy is maintained, Shashank. He is not going to. Uh, he's not going to ever. No matter what he does from this point on, he's never going to be like my legacy. My legacy. His legacy is sorted. He's won everything that is there to win. Guys, one more like 400 हो जाएंगे, and then we'll call it quits. आज रात को आगे, can't guarantee, to be honest. Can't guarantee. Klopp come to Barca, says 11 no goals ki. Mushkil. But he will never. I don't think he's gonna manage for at least a year until he starts missing it again. Until he starts missing it again. I can empathize. This is exactly how I felt when Zizou left us. But Zizou was there for 3 years. This is, देखो, with Zizou you had highs, and then you got sad that you won't see those highs. With Liverpool, there were lows, there were highs. There was a low last season and there's a high this season. It's a full emotional ride मेरे हिसाब से. So yeah, credit. I mean, I can completely understand आप भी कहाँ से आ रहे. Zizou भी जाना बहुत sad होगा. Same with Wenger. With Wenger, it was a big high and then a big low. But yeah,
Anyways, chalo guys, हम end करते हैं. Other streamers will also probably go on about this. Um, and so yeah, chalo, we'll call it quits. Thank you so much for joining. All 500 of you now, 330. I'll see you all soon. I'll see you in the chat in some other streamer stream. Hi bye bol dena. Like the video, subscribe if you're new. I'll see you all soon. Tata. Bye bye.